Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, to all my graceful audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Rahmat Empowerment Wala, striving to achieve self sustainability for me and for the people alike. I'm host of this interview series named Empowering Minds. इस इंटरव्यू सीरीज में हमारी कोशिश होती है कि ऐसी मौजूद शख्सियात को मदऊ किया जाए जो ना सिर्फ अपनी माइंड पावर एक्सप्लोर कर चुके हों बल्कि दूसरों के माइंड को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हों so that we get to learn from their experiences and get motivated by their passion towards the betterment of the society. इसी सिलसिले में आज के हमारे मेहमान हैं माहा नोमान साहिबा। इनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं, कोशिश करते हैं इनसे नॉलेज हासिल कर सकें। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहा नोमान साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैस कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू मैम। और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने हमें इज़्ज़त बख्शी कि हमारी स्क्रीन पर आप मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज़ ऑल माइन बिकॉज़ अगर आपने भी मुझे या मेरे काम को देखा है तो आई थिंक कि ये क्रेडिट आपको भी जाता है कि आप ही यू नो एम्पावरिंग माइंड्स का पार्ट हैं कि यू आर आल्सो लुकिंग फॉर द टैलेंट। Thank you so much, ma'am. So, ma'am, for the sake of the pattern, to follow the pattern, तो आपका इंट्रोडक्शन मैं चाहूँगा ताकि हमारे ऑडियंस को भी पता चले कि आप कौन हैं। Sure. As you know, I'm Maha Nauman, and मैंने अपना मास्टर्स किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एंड I studied my MPhil, MS in Human Resource Management back in 2019. And then I was always of the belief that I have to do something. I started doing teaching for a couple of months, but then I thought that this is not for me right now. Then I started working as an HR interns, HR executive manager job ki start mein. Then I got married, but after I got married, I started feeling more like it, that I am not going to stop here. So I did my MS after getting married. Then I started doing my small businesses. So right now I am a resin artist. I work on resin, and I have a page on Instagram on which I sell these things. And then along with it, I have a 1 carat jewelry and hair accessories page, which I can say it's a startup right now because it's been just a couple of months I have started this. So I am always on the go for something more. एक्सलेंट मैम। मैम, आपने ज़िक्र किया एचआर डिपार्टमेंट का और एचआर स्टडीज़ Yes. आपने की हैं, तो क्या आपको बचपन से ही था कि मैंने एचआर स्टडी करना है और इसी में मैंने अपना अच्छा, करियर बनाना है? आई वोंट से कि बचपन से था बिकॉज आई थिंक इतना ज्यादा उस टाइम शऊर नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये समझे कि एक इस तरह से था कि आई वॉज वेरी गुड इन मैथ्स, आई ऑलवेज लव्ड इट, आई वांटेड टू डू इट। देन आई वॉज वेरी गुड इन कंप्यूटर साइंसेस, बट कुछ इस तरह से चलते चलते I just ended up in human resource management as one of my uncle was, working in human resource department, and he used to, really motivate me that this department, I feel that HR is not only limited to the offices. If I see myself as a homemaker as well, I myself is working as a human resource personnel here, because I am looking for, I am hiring a helper at my home. I'm managing a house just like an office. I'm taking care of the expenses or the paying bills and paying for the my helpers and supporters. So I don't believe that it's only for the offices. So it yes, when I started it, I really got motivated. That's why I pursue my MS further in human resource management. Excellent, ma'am. You are a very important personality because nowadays everyone wants a good job in a good company. So you could Yeah. train people how to pursue good companies to get good jobs. Yes. Yes.
But I guess right now, as the economy of Pakistan is right now, getting jobs is very difficult right now, because everyone is shrinking their jobs and their structures right now, and all multimedia multinational companies, they're also laying off people. So I guess right now, our Pakistani youngsters, or everyone, we should more focus on getting things done at on a different path. Right now we should not only look for the jobs, we should try out the new skills, or try to learn new skills and then do something else, because we cannot only depend on the job. Because when I started doing these things, the startup projects, I realized that I'm, alhamdulillah, a mother of three girls. Yeah, so it is very difficult for me to leave my kids at home and then go for a job. I feel very I can hats off to those women who are doing the jobs, full day 9 to 5 jobs, and they are managing their home. But as this is just my opinion, that I am not like that. I'm a bit concerned about how my kids are going to be at home and who are going to take care. So the job thing, I don't think it's for me right now, because I don't want to go out and do something else and then come back and see my kids sleeping at night. But uh, this did not stop me either. I thought कि अगर मैंने job नहीं करनी, then what else? So I can work at home. So I don't believe कि job ही सिर्फ जो है वो important है. सही मैम। मैम, आपने दो बिजनेसेस का आपने जिक्र किया, एक आप रेजिन आर्ट प्रोडक्ट्स एंड द सेकंड वन 1 कैरेट ज्वेलरी। तो आपने कैसे सोचा कि आप को ये बिजनेस करना चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए? व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट? Yes. व्हाट इंस्पायर्ड Um, यू टू डू दिस? the first one, my father-in-law, I would say that he's a person who always motivates me to do something. I remember as soon as I got married, after a couple of days, he asked me that, what are you going to do now? And because you are not going to waste your talent. He motivated me to study ahead and start working somewhere. And then my father, he always motivates me and encourages me to do a business, because he is of a mindset that you should focus on doing your own business and earn yourself. So initially I started with a clothing business. Actually, it was during the time of COVID, where I started a small online business only on Instagram and Facebook. I started from there. I started a clothing business for young girls and ladies. After a couple of months, I had to move to Islamabad. I was actually living in Lahore at that time, and it was not. I thought it would be interesting for me, but somehow I decided that it's not going to be. I don't think it's my thing. So the resin art thing, yes, it's sometimes I also feel that how can I be so creative like this, with colors and shapes, and it's a form of art. So because I was never much interested in arts before, I remember I have only done a stats poster exhibition thing during my studies, but other than that, I was not interested in arts. But one of the teacher I actually took the course from, I saw her content on Instagram. I used to see her work. I used to see how motivated she is towards her work. So I liked the work. I decided to take the classes from her. She provides online classes on Zoom. So I took the courses. I, try to do it at home. And then I, continued the work, started, taking the courses again and again to learn more and more. And then when I thought that I'm good enough in this, then I started, taking it as a business. And as a resin art product, it's a very luxury product, because it's not a necessity that every household needs.
because it's a form of like trays, posters, tables, and clocks. So I would consider it as a luxury product. So it's not a, some, it's not a business that would run on a monthly basis. So it's more like a once a month you get a customized order, or twice or thrice you get an order. So I thought that I have, still plenty of time, and I want to do something more which will engage me on a daily basis. So my father motivated me with that. Why don't you start a business in which, drop shipping type, they let you get the product from somewhere and then start selling it with the name of your own product. So then I started this Sparkll business, where I, purchase the products from some market, and then I further, market it and present it, and then I further sell the products. I'm doing it along with my sister. She basically handles the marketing thing, and I handle all the inventory and finance and where to get the stuff. So that's what I do. And along with this, then we started a hair accessories part as well, because right now I feel that not a single product line is not only it's not going to fulfill the business success. Because if I want to earn from it, if I want it to be successful, then I need at least multiple streams. Because मुझे sometimes maybe it's just me, or sometimes I feel कि और भी ऐसे लोग होंगे जिनको एक चीज से तसल्ली नहीं हो रही. So I was like कि अगर एक ज्वेलरी से ही सिर्फ इनकम नहीं जनरेट हो रही, तो आई कैन add more products in it. Because it's all on social media ना. मेरा इसमें कोई प्लेस यूज नहीं हो रही, मेरी कोई ऑफिस स्पेस नहीं यूज हो रही है. आई एम डूइंग इट एट होम, सो व्हाई नॉट ऐड मोर प्रोडक्ट्स. ठीक है. So I started this, and one thing I feel is कि I never think कि how am I going to do it, how am I going to finance it. I literally started all this from only 10,000 rupees. I saved those 10,000 and I started working in it. Because, yes, people ask and try to demotivate you sometimes as well. कि अच्छा पैसे कहाँ से आएंगे, अच्छा तुम सामान कहाँ से खरीदोगी, तुम जाके अब मार्केट में जाओगी, मार्केट में जाके ये काम करोगी, सामान लेने के लिए यहाँ जाओगी वहां जाओगी. So I never listen to them, and I believe कि अगर आपके पास 1,000, 2,000, 3,000 भी है ना, you can actually start working from there as well. एक्सलेंट एडवाइस मैम, एक्सलेंट. क्योंकि आज के ज़माने में कोई इतनी ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट गेन भी नहीं Yes, कर सकता, जमा भी नहीं कर exactly, सकता. exactly. अगर आप ये सोचें कि फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस कपड़े ज्वेलरी का बिजनेस ही अगर आप देख लें, तो अगर आप 2-3 प्रोडक्ट्स ही ले लेते हैं, ठीक है, आपने अपना इंस्टाग्राम पे जो पेज बनाना है, इट विल बी फ्री. ठीक है. Everyone right now has a mobile phone. ठीक है. You can take good pictures from your phone, post them on the social media. You can use different hashtags nowadays are available. You can, in professional language, it's like search engine optimization. You can use these, if you have talent, if you have a mind that, you think that you can do it, you can start with 2 or 3 products as well. डेफिनेटली मैम, एक्सलेंट एडवाइस. अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आप उन वेमेन को कैसे एडवाइस करेंगे जो एक माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट रखती हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे और कैसे वो भी आपकी तरह आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करके कोई अपना स्टार्टअप कर सकते हैं? I think all women can do this. आई रिमेम्बर कि जब मैंने रेजिन आर्ट का काम नहीं स्टार्ट किया था, तब मेरे पास रेजिन आर्ट का कोई स्किल नहीं था, बट आई लर्नड इट. ठीक है. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड सेइंग कि जी मैंने ज्वेलरी का बिजनेस करना है, सो आई डोंट हैव अ स्किल जिससे मैं ज्वेलरी बनाऊं. ठीक है. बट यू हैव टू थिंक कि आपका इंटरेस्ट किस में है, वट आपका टेस्ट किस चीज में है. जिस तरह के इफ मुझे अगर रेजिन आर्ट चीज पसंद आई थी, तो फिर मैंने उसको बेचना शुरू की. अगर घर बैठी एक औरत जो है, वो अगर उसको सुई धागे से कढ़ाई भी करना आती है ना, तो आई थिंक शी कैन इवन स्टार्ट taking it as a business as well.
I always used to see my mother. She used to do the embroidery on her clothes. हमारे कपड़ों पे कर रही थी सब कुछ. तो even she can start this as a business. So I believe every woman or every person has some talent. ठीक है. अगर अल्लाह ताला ने हमें ये हमारे अंदर ये चीज रखी है कि हमने बच्चों की तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने हमें औरतों को माँ को ये चीज दी है कि हमने बच्चों की तरबियत करनी है, तो आई थिंक अल्लाह ताला या सबको ये चाहना चाहिए कि हमें बहुत टैलेंट है कि हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है कि हम अगली जनरेशन की तरबियत कर रहे हैं. सो वी जस्ट नीड टू थिंक कि हमने क्या करना है, ये ना सोचें कि कैसे करना है. बिकॉज जब आप नियत कर लेते हैं ना कि मैंने ये काम करना है, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद कोई ना कोई सबब बना देता है आपको. यू जस्ट नीड टू थिंक के मुझे पढ़ाने का शौक है, अगर मुझे पढ़ाई से रिलेटेड का शौक है, इफ यू आर गुड इन मैथ्स, इफ यू आर गुड इन एनी सब्जेक्ट, नाउ डेज यू कैन गिव ऑनलाइन ट्यूशंस. ठीक है. एंड इफ यू आर गुड इन कुकिंग, you can start selling things on food panda. You see food panda पे भी अब home chefs की option available है. So I think अगर कोई भी घर बैठी औरत है, अगर for example उसने बहुत ज्यादा तालीम हासिल नहीं की या उसके पास इतनी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके अपने किसी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो आई थिंक शी इज अर्निंग. उसको घर में खाना तो बनाना आता ही है. ठीक है. अगर खाना भी बना के वो बेच सकती है, तो डेफिनेटली दे कैन डू दिस थिंग. आई पर्सनली नो अ फैमिली मेंबर ऑफ माइन who are actually doing this business. They make the frozen items at home and they are selling them on Instagram. So you see, you don't need something very luxurious, or you don't need a very important products to sell or to work on. छोटी सी चीज के ऊपर भी काम किया जा सकता है. एंड जो एडवाइस मैं देना चाहूंगी, इट वुड बी लाइक कि इफ यू थिंक दैट अभी आपके पास अगर कोई भी ऐसा बंदा है जिसके पास कोई भी स्किल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को लगता है नहीं है, देन अगर आप ऑनलाइन जॉब्स की प्लेटफॉर्म्स पे जाके देखें, तो वहां पे आपको जाके पता चल जाएगा कि मार्केट में किस तरह की जॉब्स की जरूरत है. Mainly they are related to the computer designing and then search engine optimization, WordPress designing, logo designing, graphic designing. Then learn a skill, get a skill then. If you are really motivated towards doing anything, then learn it and then start doing it. Excellent advice, ma'am. Ma'am, talking about learning and education, मैं चाहूँगा कि आप एजुकेशन पर थोड़ी अपना एडवाइस दें, हमें रोशनी Yes. डालें इस मुद्दे पर. Education is like no doubt the most important thing for everyone. I believe कि अगर हमने आगे अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देनी है, तो हमारे खुद के लिए तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं खुद पढ़ी लिखी नहीं होंगी, तो जब मैं अपने बच्चों को अगर फॉर एग्जाम्पल स्कूल भेज भी दूंगी, तो मैं उनको कैसे अच्छा पढ़ा सकती हूँ. क्योंकि खाली माँ पेरेंट हम लोग अगर ये सोचते हैं कि स्कूल भेज के हम इनको समझा सकते हैं या पढ़ा सकते हैं, तो ये हमें जानना जरूरी है कि घर में जो माँ बाप इन्वायरमेंट पेश दे रहे हैं बच्चे को, और जो खुद अटेंशन दे के पढ़ा रहे हैं, वो भी उतना ही जरूरी है. क्योंकि अगर बच्चा स्कूल से पढ़ के आ रहा है, तो अगर मैं उसको दोबारा रिवाइज करा दूंगी वो चीज, तो उसको ज्यादा अच्छी वो चीज समझ आएगी. एंड एज फार एज द इम्पोर्टेंस इन लॉन्ग रन, अगर मेरी पर्सनल ग्रोथ जो है वो भी इस पढ़ाई पे ही डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल before I started this jewelry business, I guess started a couple of months ago, I was thinking थी कि मैंने अब क्या करना है. ठीक है. उस वक्त मुझे बिजनेस का आइडिया नहीं था कि मैंने ज्वेलरी का करना है. तो मैंने फाइवर और अपवर्क पे स्टार्ट किया देखना कि मैं कोई ना ऑनलाइन जॉब करूंगी. तो आई थॉट मैंने जो एक्सप्लोर की चीज, उसमें मुझे ये मिला कि जो HR जो मेरी अपनी पढ़ाई है इस टाइम फिलहाल, उससे रिलेटेड इतनी ज्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं थी. द मोर वर ऑफ रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंसेस, लोगो डिजाइनिंग, एंड देन आई सॉ द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. Then I myself, took classes and course from DG Skill is a platform जहाँ से आप online courses कर सकते हैं, and they are absolutely free. You can do it from there. मैंने search engine and optimization पे course किया, पूरा freelancing पे course किया, because मुझे ये एहसास हुआ कि देखिए मैंने उस टाइम पढ़ाई को छोड़ा नहीं,
पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके ही पढ़ना है। मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मैं अगर कुछ काम करना चाहती हूँ तो मुझे अगर अपने टाइप की काम नहीं मिल रहा, देन आई डिसाइडेड टू लर्न इट। सो एजुकेशन इज, ये हर तरह के फॉर्म में एजुकेशन है कि अगर मैं कॉलेज, जरूरी नहीं है कि मैंने कॉलेज जाके ही ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़नी थी, मैंने घर बैठ के उसको पढ़ा, ठीक है, और आगे मैंने उसको यूज किया। अब जिस तरह मैं अपने ऑनलाइन बिजनेस में भी इसको यूज करती हूँ, आई नो हाउ टू प्रमोट माई प्रोडक्ट्स, वेयर एंड हाउ एम आई गोइंग टू इम्प्रूव द मार्केटिंग ऑफ माई प्रोडक्ट्स। सो अगर मुझे तालीम नहीं होगी, मुझे इस चीज की नहीं हो गई इंफॉर्मेशन किसी चीज की, तो वो मैं काम करते हुए मुझे उसमें दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते इसके बगैर, लेकिन आप बेहतर काम कर सकते हैं अगर आपके पास एजुकेशन है। एंड एजुकेशन कैन बी एनीथिंग, इट्स आप बुक्स पढ़ के कर सकते हैं, आप कोर्स पढ़ के कर सकते हैं, आप इवन ऑब्जर्वेशन से लर्न कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक कि किसी भी बंदे को अपनी लर्निंग जो है उसको कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। एक्सलेंट मैम, बेशक ऐसी है। मैम आपने जिक्र किया डिजिटल स्किल्स का, और आजकल हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल है, ख़ासतौर पर हमारी जो यंग जनरेशन है, तो वो तो अपना सोने के अलावा बाकी जो वक्त है वो फ़ोन और इंटरनेट पर ही गुजारते हैं। तो एग्जैक्ट आप क्या एडवाइस करेंगी कि कैसे इस यूज़ को हम प्रोडक्टिव बनाएं, ना कि सिर्फ वो स्क्रॉल करें और इम्पेशेंट रहें स्क्रॉलिंग करते करते? तो किस तरह वो बेहतर यूज़ कर सकते हैं हम सोशल मीडिया का? देखिए, सोशल मीडिया राइट नाउ इज सच अ बिग प्लेटफॉर्म। आप ये देखें कि मुझे अगर देखा जाए तो मैं रेजिन आर्ट का अगर काम करती हूँ या ज्वेलरी भी, इन चीजों को बेचने के लिए मुझे मार्केट में नहीं जाना पड़ा, जस्ट बिकॉज आई हैव दिस मार्केट प्लेस, जो वर्चुअल मार्केट प्लेस इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट राइट नाउ द सोशल मीडिया इज, कि आपको घर से निकले बगैर आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपना बिजनेस चला सकते हो। मैं घर बैठे चीजें बेच रही हूँ, ठीक है। सो अगर हम इस चीज को समझ लें कि हमने इसको पॉजिटिवली कैसे यूज करना है, इंस्टेड ऑफ होल डे स्क्रोलिंग द एक्सप्लोर पेज ऑफ इंस्टाग्राम के, अच्छा आज इसने ये खाया, इसने वो देखा, उसने ये पिक्चर दी है, वो वहां पे वेकेशन के लिए गया हुआ है, तो हम ये देखें कि वो बंदा अगर वहां वेकेशंस करने गया है तो वो पीछे उसके काम कितना कर रहा है, ठीक है। हम लोग नॉर्मली पर्सनालिटीज जो हमारी जो एक्टर्स और ये मॉडल्स और ये सारे हैं, इनको देख के बड़ा मोटिवेट होते हैं कि भाई इसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, या ये बंदा वहां गया हुआ है वेकेशंस के लिए, लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि वो उसके पीछे मेहनत कितनी कर रहा होता है। सो अगर हम इस चीज को मान लें या इस चीज का एहसास हो जाए कि सोशल मीडिया राइट नाउ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अस, क्योंकि देखिए साइड इफेक्ट्स तो हर चीज के होते हैं। अगर मैं फेस टू फेस मार्केट में जाके भी कोई चीज बेचना चाहूँ तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि अच्छा, मैं दुकान पे बैठ के काम बेच तो सकती हूँ चीजें, लेकिन फिर मुझे अपने लिए दुकान खरीदनी पड़ेगी, मुझे इलेक्ट्रिसिटी पे करनी पड़ेगी, मुझे स्टॉक रखना पड़ेगा, ठीक है। साइड इफेक्ट्स तो उसके भी हैं। इसी तरह सोशल मीडिया के भी साइड इफेक्ट्स हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट करते हैं, ठीक है। इट इज रियली एडिक्टिव। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कर रहे हैं, हम भी ऐसे ही हैं, हमने भी इस चीज को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगा है, और अभी भी समटाइम्स करते होंगे, हम लोग भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन द थिंग इज कि अगर उसको अच्छा टाइम भी टाइम मैनेजमेंट, और उसको अगर हम अच्छी तरह यूटिलाइज कर लें, बिकॉज राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, both my businesses, they are working on Instagram. So here I have used the social media in a positive manner. So I think बहुत सारे बच्चे आजकल ये काम कर रहे हैं, दे आर मेकिंग कंटेंट, सो गुड कंटेंट। बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही जो है वो शूट्स कर रहे हैं, अपने मॉडलिंग में जा रहे हैं, एड्स बना रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर अ गुड पर्पस एज वेल। बट आई थिंक कि अभी भी थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा हमारे बच्चों को ये समझने में कि सोशल मीडिया पे सिर्फ वीडियोस और पिक्चर्स देखने के लिए नहीं इस्तेमाल करना, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। एक्सलेंट एडवाइस मैन। आई होप कि जो यंग जनरेशन है हमारी वो आपको सुने और उस पर अमल भी करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, बिकॉज इस टाइम पे बहुत मुश्किल है इस चीज को बच्चों को समझाना, बिकॉज आई माई सेल्फ इज अ मदर,
एंड आई एम विटनेसिंग दिस थिंग कि हमारे बच्चे जब यूट्यूब पे कार्टून्स देख रहे होते हैं या कुछ भी, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि वो वीडियोस देख रहे हैं, वो ये चीज। लेकिन जब हम उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा अब इसके अलावा भी और इसका यूज है, लाइक आई वाज टेलिंग माय 7 ईयर डॉटर कि बेटा जो आप ये कार्टून्स देख रही हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्टून्स हैं, लाइक एक कार्टून है नंबर ब्लॉक्स, दे आर वेरी गुड फॉर किड्स। अगर आपने मैथ्स की मेंटल मैथ्स बच्चों को सिखानी हो तो आप वो कार्टून्स यूज कर सकते हैं। सो आई वाज टेलिंग हर, एंड मतलब कि वो 7 साल की बच्ची को भी ये लग रहा था कि अच्छा, इट्स बेटर दैट आई वॉच द कार्टून्स राइट नाउ इंस्टेड ऑफ द नंबर ब्लॉक्स। सो वी नीड टू मोटिवेट देम, एंड हमें उसको उनको इसकी इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी कि बेटा देखो, अगर आप यूट्यूब पे इसकी वीडियो देख रही हो कार्टून्स की, तो अगर आप ये नंबर ब्लॉक्स देखोगी तो आपको मेंटल मैथ्स के लिए इन द फॉर्म ऑफ कार्टून ही सीख जाओगी आप वो चीज। एंड आई बिलीव मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो बच्चे हैं वो हमें देख के ज्यादा सीखते हैं एज कंपेयर कि हम उनको लेक्चर दें या हम उनको बताएं। व्हेन आई रीड अ बुक, आई रीड novels and different books. So my kids now, they love going to the bookstores. So I believe कि हम जो कर रहे हैं ना वो हमारे बच्चे आगे सीखेंगे। यंगस्टर्स भी जो हैं, हमारे अपने छोटे बच्चे भी हैं, लाइक व्हेन आई एम वर्किंग इन माय रेजिन आर्ट वर्क भी कर रही हूँ, केमिकल्स एंड कलर्स के साथ काम करती हूँ, तो मेरे बच्चे मुझे देख के ये मोटिवेट होते हैं कि हमारी अम्मा कोई काम कर रही है, ठीक है, शी इज डूइंग समथिंग, और उनका दिल करता है कि हमें भी ये काम करने दें आप। यू सी, तो जब मेरे बच्चे मुझे देखेंगे तो मेरे बच्चे ऑटोमेटिकली इस चीज को उनके माइंड में ये आ जाएगी कि मैंने भी आगे जाके ये काम करना है, ठीक है। अगर वो मुझे देखेगी कि मैंने सिर्फ रोज एक ही फॉर्म, ये रूटीन बनाई हुई है कि मैं सुबह उठ के उनको स्कूल भेज के खाना पकाती हूँ, कपड़े धो रही हूँ, सफाइयां कर रही हूँ, यू सी ये सारे काम इंपॉर्टेंट है, ये सारे काम हो जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा ये एक मोनोटोनस वाला काम है। लेकिन अगर वो ये मुझे देख रहे हैं कि मैं अपने पूरे दिन में टाइम निकाल के अपना रेजिन आर्ट का काम कर रही हूँ, पूरा टाइम निकाल के मैं बैठ के अपने लैपटॉप के ऊपर अपनी इन्वेंट्री, अपनी बजटिंग कर रही हूँ कि मैंने अपने ज्वेलरी को कैसे मेंटेन करना है काम को, तो वो इस चीज को देख देख के ही सीख जाएंगे कि अगर हमारी अम्मा अब्बा ने ये काम किया था, तो ये उनके लाइक इट्स लाइक उनको, उनके माइंड में ये ऑटोमेटिकली चीज बैठ जाएगी कि हमने भी ये करना है आगे। सो शो देम मोर इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम। बिल्कुल मैम, सही कहा आपने कि बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसको वो फॉलो करें, ना कि सिर्फ वर्बली उनको इंस्ट्रक्शंस देना। तो यस, ये एक चिल्ड्रन साइकोलॉजी होती है कि उनको बता एग्जैक्टली, के करके दिखाया जाए कि ये इस तरह होगा। यस, यस, Excellent, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your time. I wish we had lot more to learn from you, लेकिन अब वो वक्त ख़त्म हो रहा है। तो मैं लास्ट में अपना फेवरेट क्वेश्चन जो है वो मैं चाहूँगा, जो मैं सबसे पूछता हूँ और आपसे भी पूछूंगा कि what advice would you give to a 10 years younger version of yourself, कि 10 साल पहले अगर हम्म, मैं ये काम कर लेती तो आज कुछ हालात मेरे मुख्तलिफ होते। तो सो दैट वी गेट टू लर्न हाँ, फ्रॉम दैट एडवाइस कि अगर इस एज में अगर कोई है तो आपकी वो एडवाइस को फॉलो कर सकता है। हम्म। अगर मैं अपने आप को एडवाइस देती तो उस टाइम मैं यही कहती कि इट्स ओके, लाइक एवरीथिंग कैन हैपन, वट एवर आई कैन ड्रीम इट, आई कैन मेक इट हैपन। हम लोग ये सोचते हैं कि जी मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगी, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊंगी, लेकिन मैं कैसे करूंगी? आई थिंक कि ये मत सोचें आप कि मैं कैसे करूंगी, जस्ट थिंक कि मैंने क्या करना है, और और मैं वो करूंगी। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, एंड दूसरों के, आपको जब आप काम करना शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको इस तरह कहेंगे कि अच्छा कैसे करोगी, बच्चे कौन संभालेगा तुम्हारे, अब बाहर आदमियों के बाजार में जाके, अब वहां पे दुकानों पे आदमी बैठे होंगे, अब जाके उनसे तुम बात करके देखोगी, ये करोगी, तुम्हारा काम कौन घर का करेगा? जस्ट डोंट लिसन टू देम, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सब चीजें ठीक कर देता है। अगर आप टाइम को मैनेज करके कुछ भी करोगे, एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू दिस, that's what I believe in, and that's what I tell my daughters as well. Whenever they are going for exam or a test, I just tell them that Mena, you can do this, and you know this how to do it.
जस्ट डोंट थिंक कि मैं भूल जाऊंगी, मेरा एग्जाम कैसा होगा. यू नो दिस एंड जस्ट हैव अ फेथ इन योरसेल्फ. Excellent, ma'am. Excellent. और time skill is itself a professional skill, I guess. Time management Yes, skill जो it है. is. It is definitely. Thank you so much, ma'am, for your excellent, for your time and for your presence here. मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और मुझे यकीन है कि मेरी ऑडियंस ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा. Thank you so much for your इंशाल्लाह आई time. जस्ट होप के जिस तरह मैं अगर कुछ घर बैठ के कर रही हूँ तो बाकी लोग भी कुछ ना कुछ ऐसा कर सकें. बेशक बेशक इंशाल्लाह. Thank you so much. So audience, that was Maha Nauman साहिबा. मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट गेस्ट के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.